as I mentioned, Peter, who is Jan's husband, is a very dear friend of mine from England over the past 7 to 8 years. And as I also had mentioned, when he called me up last year and said that Jan wants to do another, get another Guinness World Record, which was going to be the 5th one, it was interesting. When he mentioned it, I said, okay, this is a brilliant idea, let's do it. So that's how we got involved, that's how we started planning. And of course, one of the things that I asked both Jan and Peter was whether we can have Indian women participate in this expedition. And when they said yes, we started immediately looking. I was very fortunate that just by sheer luck, I happened to meet Tanvi's dad at a school reunion, and I just happened to mention the expedition and they loved it. So they called up Tanvi and said, Tanvi, you have to do this because it's one of these life-changing opportunities, which he readily agreed. And then a few days later, I was talking to Ankita. She's been a good colleague and a close friend for the last 4 to 5 years. And I mentioned to her this whole expedition. She got extremely excited. And she said she knows personally a very, very hardworking, beautiful, and dedicated individual by the name of Madhuri. And she's done mountaineering courses, but she's also a supermodel, so this would fit really well. And then we had the team. So when they were introduced to Jan, and Jan spoke with all of them, they had... Maidens. Maidens, as we all know, are ladies. But also, the maiden voyage of a ship is the first voyage. And we feel this is the first such expedition of ordinary women. We're not sportswomen, we're not professional soldiers, we're just ordinary women who will be scooped up by me to share my goal or my dream. And we just thought it was a really good name, Polar Maidens. And it shows that we're women. And one of the reasons I wanted women is that 100 years ago, when Captain Scott and Shackleton and Tom Crean went to the pole, it wouldn't have entered anyone's imagination that women could do this. So 100 years ago, women in Europe got the vote, and 100 years ago, this would not have been considered. So it shows, although we women think things are moving slowly, we have actually come a long way, and we're hoping that the results of us doing this will take us further quickly. Ma'am, you have 2 young ladies with you. How much excited you are? I'm really excited because what you don't realise is I have many connections with India, but one of the main connections I have is my son married a beautiful Indian girl, and I have 2 exquisite grandchildren who are these little girls when they were small. I look at my grandchildren and I can see Tanvi one day and Madhuri one day, and so they've given me such joy. I can't tell you. From the moment we met on WhatsApp, how crazy is that? And I think I can truly say from the very first conversation, we just gelled. And since then we send each other messages, we send each other jokes, we send each other little bits of philosophy, and we start our days with a smile because we share them together. And we're going to need those smiles when we're in the column, when we're marching along. And I know that we will have them. I know we will. And as I say, I have these 2 beautiful grandchildren, so I'm sort of feeling that they will be inspiring my grandchildren to do something similar in a few years' time. When you're really 74 age? I'm 73 now. I was born in 1944, just at the end of the war. In fact, while my mother was in hospital having me, my father was a pilot at Arden, and he was missing for June killed. So I mean, that's how long ago. And my birthday will be on the 12th of December, and we'll be well and truly, we'll probably be 4 or 5 days into our march, and hopefully we'll be getting used to the altitude. And I don't know whether to take a cake or... I was thinking champagne, but I think whiskey, because whiskey at the North Pole was the consistency of golden syrup. And I want to see if whiskey at the South Pole is equally wonderful, because it goes down so slowly and it warms the cockles of your heart. So I think we'll be saying happy birthday with whiskey, whether you like it or not. तन्वी आप कैसे बोर्ड पे आए, कैसे इनके साथ में आए, कैसे थोड़ी बताएंगे? जी बिल्कुल. Actually, I was waiting for something life-changing. भगवान ने मेरी दुआ सुन ली.
मुझे एक ऐसा इवेंट के साथ मेरा नाम जुड़ गया जो सिर्फ लाइफ चेंजिंग ही नहीं है, जो लाइफ चैलेंजिंग भी है। तो बस अभी आप सबका दुआ और हम सबका हार्ड वर्क कि हम लोग साउथ पोल में सक्सेसफुल ट्रिप करके वापस आ जाए, क्योंकि हम ये साउथ पोल एक्टिविटी में पोलर मेडन ज्वाइन करने से पहले हम सिर्फ यही सोचते थे मुझे सक्सेसफुल होना है। पर अभी पोलर मेडन के साथ चलते चलते पोलर मेडन का हिस्सा बनने के बाद हमारा जीवन का मकसद भी बदल गया है। हमें सक्सेसफुल इसीलिए होना है कि हम दूसरे लेडीज़ों के सामने एक मशाल बन सके, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो प्रॉब्लम है टैलेंट है। लेडीज़ों में टैलेंट है, पर वो लोग अपना जो सपना वो सबके सामने नहीं ला पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये समझाया जाता है यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। अगर मैं और तन्वी पोलर मेडन टीम के साथ ये सक्सेसफुल करके वापस आ जाएंगे तो हमारे देश का पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत का बहुत औरतों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी इन लोगों के साथ कर सकते हैं, इन लोगों के तरह अपना जो लिमिटेशन है वो क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो औरतें कॉन्फिडेंस, उनमें जो कॉन्फिडेंस है उसको आगे लेके आए तो वो होगा हम लोगों का सक्सेस, क्योंकि कॉन्फिडेंस सब में है, उसको जगाना पड़ता है। अगर हम लोगों ने, हमारा पोलर मेडन टीम ने वो कर पाए तो दैट विल बी आवर सक्सेस। तो एज ग्रुप क्या होगी, एज ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होगी महिलाओं के लिए खासतौर पे, और अच्छा। उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको ट्रेनिंग दी अच्छा। जाएगी? हम लोगों का जो एज ग्रुप है 23 तन्वी एंड 73 जैन, तो 50 इयर्स का गैपिंग है 23 to 73। तो और हम लोगों का लैंग्वेजेस का डिफरेंसेस है, हम लोगों का कल्चर्स का डिफरेंसेस है। फिर भी हम लोग एक साथ स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग करके वापस आए। यहाँ से जाने से पहले हम सोच रहे थे कि वहाँ एडजस्ट कैसे करेंगे, पर जो हम लोगों का 15-20 डेज़ का ट्रेनिंग था वहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये तो हमारा फैमिली है, इंडिया में जो छोड़ के आए वो यहाँ पर मिल गया, और ऑल वीमेन फैमिली। क्योंकि एक चीज़ हम लोगों के दिमाग में है, जहाँ औरतें एक साथ हैं वहाँ झगड़ा, लड़ाई, बीचिंग ये सब चलता है, पर हम 6 वीमेन माने इंक्लूडिंग आवर लीडर गाइड डेनिस, हम लोग जब 6 वीमेन एक साथ थे, हम लोगों में कोई लड़ाई नहीं, कोई बिचिंग नहीं, हम लोग हंसते खिलते 15-20 डेज़ एक साथ स्पेंड किए, टायर पुलिंग ट्रेनिंग किए, जो हम लोग इंडिया में वापस आने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तन्वी इज़ कंटिन्यूइंग एट भुज एंड आई एम कंटिन्यूइंग एट दार्जिलिंग। सो ये था ट्रेनिंग हम लोगों का, and all credit goes to co-events, Mr. Rajiv Dalal and obviously Madam Janmik, जो हम लोगों को मोटिवेट किया है। यहाँ पर हम लोगों का पोलर मेडन जो ट्रिप होने वाला है, इसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मेंटल फिटनेस, विदाउट कॉन्फिडेंस हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कितना भी फिट क्यों ना हो जाए। और अगर इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट तो फिजिकली अपने आप को। अप्रैल में इंटर्नशिप ढूंढ रही थी, मेरा डिग्री प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट था, तो तभी ड्यूरिंग द सेम टाइम मैं बॉम्बे में थी, और तभी मेरे फादर और मिस्टर राजीव दलाल अपने स्कूल रियूनियन में मिले थे, और उन लोग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, कभी पहले नहीं मिले थे उन लोग, और दे हैपन टू सिट राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड उन लोग बात किए कि उन लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज क्या कर रही है। तो मिस्टर राजीव हैपन टू मेंशन दिस एंड said that they were looking for women from India. So both my parents, they jumped at it, and I had this like 7 emails like back to back, ping 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 ping, my phone was going, and I read all about it, and it was amazing. Like I was really amazed by it, and I'm very thankful that this opportunity has come my way. I don't know what I did to deserve it, but it has practically fallen into my lap. So I just grabbed it, and it's extremely rare to go to Antarctica in the first place, and to go inland and to the South Pole.
So that is extremely rare. So I gradually am working hard with these lovely women, and yeah, I'm really thankful to my family, both my parents, and not only my parents, my grandparents, not only my immediate family, but even my extended family. Like, I'm amazed by how excited they are. They're more excited than I am. They're like, Tami, show me pictures. I was sending pictures of my family group. Yeah, it's great.